It is given by the government, and the central bank of the country is always willing to purchase and discount them. Therefore, पेमेंट का जो गारंटी है वो ट्रेजरी बिल से ज़्यादा कोई भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं हो सकता है. And it is a very liquid instrument. Short-term instruments where we have 364 days maximum and 14 days minimum. ठीक है? We have 91 days, 182 days, 364 days and a 14-day treasury bill. And unlike ordinary trade bills, treasury bills जो है, they have a claim against the government. ठीक है? And therefore, you don't need any other guarantee much more than that. Now, what are the important qualities of treasury bills or features of treasury bills are? They are very, very, very liquid. Because anytime you take it, central bank will discount it or purchase it from you. And therefore, it is very liquid. Anytime encashability, that is what we say. And again, there is no risk at all. Default नहीं करेगा क्योंकि directly you can have a claim over the government. And it is readily available. Government keeps issuing these treasury bills. And there is an assured yield. As I said, government, therefore assurance is there both on the yield as well as redemption. And cost of transaction is also very low. But you know, adding on to all these things, the yield also should be low. क्योंकि low risk, low return. We have always been studying that. जब risk low है, return also will obviously be low. And then eligibility for inclusion is statutory liquidity ratio. उसके हिसाब से ही करेंगे. And capital depreciation उसका नहीं होगा. Like you issue it at discount, redeemed at par, no depreciation in between. Now, what are the types of treasury bills? There are ordinary treasury bills and ad hoc treasury bills. Ordinary treasury bills are issued to the public also, right? And this will help the government to meet short-term finance. Instead of it going for foreign countries and borrowing, can borrow it from our own people. Now, treasury bills जो है, ad hoc treasury bills are between government and RBI. But of late, this is not in use. Government is not issuing these. RBI is also not purchasing this. Public के पास जो भी है, वो होता है, that is ordinary treasury bills. Government issues them to public. They can be discounted with RBI also. And 182 days treasury bills जो है, any resident Indian can purchase it, which can be a firm, which can be an individual, banks, financial company. ये सारे investment avenues जो है, आपको default risk तो बिल्कुल नहीं है. ऊपर से क्या है, ये लोगों का जो yield है वो भी assured है. Government involved है, इसलिए yield is assured. But then the return is also low. We will see about that a little later. Now, अभी 182 days तक आपको wait करना पड़ता है. नहीं तो you can always take it to the central bank and discount it. Are you following? समझ में आ रहा है? I'm sorry. Now what happens is, it is sold only to state governments and this. And when you see the types of T-bills, auctions सब मैंने यहाँ पे दिया है in chart form. 91 day T-bills are auctioned on Wednesday and payment will be T+2 Friday, following Friday में होता है. 182 days T-bill में Wednesday non-reporting भी, whereas following Friday में होता है. 364 days में क्या होता है, Wednesday को होता है and following Friday में होता है. See, always T+2 में settlement होता है, payment settlement जो भी है, right? मतलब if I have purchased, I need to make the payment. If I have sold, I need to get the payment, right? And I need to surrender the T-bill. Now, when you talk about, we've already seen commercial bills market, so I'm proceeding. We have seen all these yesterday, right? Now we'll see the instrument. Commercial paper. Commercial paper is a money market instrument wherein commercial paper may unsecured, it is an unsecured instrument. It was introduced in 1990.
मतलब कॉर्पोरेटेड, हाँ कॉर्पोरेट बोरोवर्स, ये इनका सब रेटिंग होता है. कॉर्पोरेट बोरोवर्स जब शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो करते हैं, दे आर गोइंग टू इश्यू वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज commercial paper, and subscribers could be corporates, high net worth individuals, or even I mean banks can subscribe for it. मतलब invest करके ये instrument मिलेगा. They are issued at discount, redeemed at face value again. समझ में आ रहा है? ये unsecured है but default risk कम है क्योंकि corporate with high reputation, high rated corporates only can issue commercial paper in the market. समझ में आ रहा है? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When I talk about primary dealers and all India financial institutions, ये लोग primary dealers जो है, ये लोग बड़े बड़े corporates अच्छे rating रहते हैं. Rating मतलब based on their track record, उनके financials, उन्होंने borrowing सब बराबर सर्विस किया है, इंटरेस्ट पे किया है, बोरोइंग सेटल किया है, ऐसे कॉर्पोरेट्स को ही अच्छे रेटिंग मिलते हैं. अगर आप अच्छे तरह से पैसे हैंडल करते हो तो आपको रेटिंग अच्छा मिलता है ना. सेम वे कॉर्पोरेट्स ऑल्सो. सपोजिंग यू बोरो फ्रॉम मी, शुभम, अगर आपने मेरे से उधार लिया और आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया, 2-3 महीना आई फॉलो यू अप, तो आपको मैं अच्छा रेटिंग दूंगी. आपके बारे में क्या बोलूंगी? शुभम के ऊपर भरोसा मत करो. भरोसा मत करो. हाँ. Same way, credit rating companies are there to find out the financials, right? अगर ये corporates बराबर अपने पैसे नहीं handle करते तो इनका भी rating कम हो जाएगा. But then those institutions that are rated high, मतलब उनके track record अच्छा है इसलिए अच्छी rating मिलती है, तो ये लोग commercial papers issue कर सकते हैं. ये जो है safe instrument है बिकॉज आपको डिफॉल्ट नहीं होता है. एक बार डिफॉल्ट हुआ तो आपका बदनाम हो जाएगा मार्केट में. आर यू फॉलोइंग? एंड अगेन सीपी 15 डेज Yes, से ma'am. 1 ईयर तक आप इश्यू कर सकते हो कमर्शियल पेपर्स, राइट? एंड दिस इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज लेस देन अ ईयर. इट इज नॉट अ कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज फॉर 15 डेज. समझ में आ रहा है? ठीक है. You should know what is CP, what are the features. Baki sir, as of now, you don't need at this level. Though I've given information, you can give it a reading. Okay? Now, when you talk about any investment, investor को minimum 5 लाख invest करना पड़ेगा. इसीलिए usually retail investors do not participate in money market. उनको जितने कॉर्पस नहीं, इतना कॉर्पस रहेगा तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. आई विल नॉट प्रेफर कमर्शियल पेपर. सो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट गो इन फॉर कमर्शियल पेपर्स. एनी डाउट्स हियर? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now certificate of deposit. Certificate of deposit is issued by commercial banks in the money market. Whenever they need money for short term, they are going to issue certificate of deposit. So subscribers could be any corporate, other banks, or high net worth individuals, right? And then it is a negotiable money market instrument. आजकल डीमैट फॉर्म में रहता है. इट इज अ यूसांस प्रॉमिसरी नोट. यूसांस का मतलब क्या है? व्हाट इज यूसांस? मतलब टाइम रहता है 15 दिन, 16 दिन, 3 महीना एक्सेट्रा, राइट? इट्स अ यूसांस प्रॉमिसरी नोट. एंड देन अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड. बैंक में आप फंड डिपॉजिट कर सकते हो. देखिए, यू कैन टेल देम यू यूज इट फॉर योर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट एंड देन गिव मी द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट इट. समझ में आ रहा है? मैंने जैसे बोला, ऑल बैंक्स कैन पार्टिसिपेट इनटू दिस, राइट, फॉर शॉर्ट टर्म फंड रेसिंग. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. अगेन बैंक्स कैन इश्यू. Ma'am, usance mean time, no? टाइम, करेक्ट. टाइम, उसमें टाइम रहता है 3 महीने का, 20 डेज का, 30 डेज का एक्सेट्रा. समझ में आया? लेस देन अ ईयर. Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. No No. doubt. All of you? Yes, ma'am. All banks can issue this, and again they will. It is also a money market instrument like commercial paper. Difference is commercial papers are issued by corporates, whereas certificate of deposits are issued by banks.
for their short term requirements. समझ में आया आपको? Are you all following? It is Yes, also ma'am. a secured instrument. Only reputed and high rated banks can issue this. Minimum amount जो है इसमें subscription 1 lakh होगा, right? So हर एक subscriber should not invest for less than 1 lakh, or they can invest for more than a lakh but in multiples, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, etc. ठीक है? Now CDs can be issued to individuals, corporations. कौन invest कर सकते हैं? As I told you, anybody, non-resident Indians, corporates and other banks, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास इतने पैसे हैं. इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू. समझ में आया? बट NRIs नहीं, एनी रेसिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन दिस, बट इट शुड बी 1 lakh और मोर. समझ में आया? अभी NRI का क्या प्रॉब्लम है? NRI इन्वेस्ट करेंगे बट उसका जो प्रॉफिट या रिटर्न है ना, वो नहीं ले जा पाएंगे. सपोजिंग आई एम रिसाइडिंग इन दुबई, ठीक है? दुबई से मैं इन्वेस्ट करती हूँ, 5 लाख इन्वेस्ट करती हूँ, मैं वापस वो 5 लाख ले सकती हूँ, पर उसके ऊपर अगर 10% 15% का रिटर्न आया ना, वो मैं इंडिया में ही स्पेंड कर सकती हूँ. राइट? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No doubt. Now CDs का maturity should not be less than 7 days. ठीक है? 7 दिन तक CD का maturity हो सकता है, मतलब 1 हफ्ते से लेके 1 साल के अंदर, right? But then फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोग कभी कभी 3 साल तक भी इश्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी. इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, बट देन एट टाइम्स दे यूज इट एज मीडियम टर्म ऑल्सो. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब बैंक्स इश्यू करती है 7 days to 1 year होता है, पर अगर नॉन बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इश्यू करती है 1 साल से लेके 3 साल, मतलब इट्स अ मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट. फर्क समझ में आया? Yes, ma'am. ईपीज जो है स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म. सीडीज जो है, एक सेकेंड शुभम, आई कम बैक टू. सीडीज जो है शॉर्ट टर्म 7 days से लेके 1 साल तक कर सकती है if banks are issuing, but if it is issued by other financial institutions, it is going to be a short medium term instrument. हाँ बोलो शुभम, you were saying something? No, ma'am. I won't. Now let's see the structure of Indian money market. It is organized as, we have the Reserve Bank of India, who's also the regulator, right? And then we have DFHI, which is going to be acting as an intermediary, as we saw earlier. We have commercial banks, we have both the public sector and private sector banks, and we have the development banks participating in the money market. Are you following? Then we have also the unorganized sector. फिर अभी भी चलता है. You may not be licensed, but still छोटे छोटे banks अपने उधारी देती है. या आप दुकान देखो, किराए का दुकान, आप गहने लेके जाके किराए में पैसे, I mean you pledge or you give it to them, and then they are going to give you loan based on that, correct? We have money lenders, we have chit funds, we have nidhis, etc. ये सब तो चालू ही है. This is called unorganized because they are not authorized by RBI. They are not licensed by the RBI. Apart from that, we have cooperative societies, where we have primary agricultural society, central cooperative society, we have primary urban development, and then we have primary urban land development, state banks and central land development banks, and then we also have primary land development banks along with these acting, right? समझ में आ रहा है? Are you following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All Yes, these are all not licensed by the RBI. So I've covered the money market part for the second time, right? So अभी Yes, ma'am. कैपिटल मार्केट जो है, अभी जितना हुआ है आज के लिए उतना बस. कैपिटल मार्केट आई विल स्टार्ट अफ्रेश इन द नेक्स्ट क्लास. समझ में आ रहा है? The lecture may be short,
but I wanted to finish this part. Yesterday I could have taken stretched a little more, but then आपको ज़्यादा हो जाता था. So we will end it for now. Continue it tomorrow. ठीक है? No, my Okay, ma'am. health is fine. It is just that I've been having lectures since morning. तो बात कर करके थोड़ा गला ऐसे हो रहा है. That is all. Otherwise I'm perfectly fine. Thank you very Okay, much. ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. कल आपको एक सेशन है at around 12 o'clock. I think I'll post it in the group. But जब सेशन रहता है, Hello. ठीक है? Sorry, ma'am. Can you Okay, repeat ma'am. again? हमारा एक सेशन होगा. Yes, ma'am, repeat. जब गेस्ट सेशन होता है, आपको हमारे रेगुलर लेक्चर कल नहीं होगा. Just for tomorrow. Okay, ma'am. Okay, ma'am. But attendance compulsory for the session. Jayashree, आप जरा Yes, ma'am. शुभम, आप Yes, ma'am. second half attendance आप maintain करो. We will take at 12. Ma'am, can you repeat again? See, tomorrow you will have a session. So you Yes, will ma'am. have lecture. ठीक है? तो आप है Yes, ना ma'am. attendance maintain करो. शुभम and Okay, Jayashree ma'am. handle the attendance part. Okay, ma'am. And my Okay, ma'am. ठीक है? One part you Okay, ma'am. पहले आधा घंटा. That is one Okay, thing. ma'am. Secondly, I wanted to tell you one thing. वैसे मेरा portion I'm very comfortable and I'm going very slowly if you observe. Repeat करती हूँ. Yes, ma'am. Chapters. Yes, ma'am. Because I'm comfortable, so don't worry about my syllabus. I have enough time. ठीक है? So we'll wind up for now. Capital market will start in the next class. So see you Okay, all. ma'am. Bye.